Very recently, I read this amazing paragraph online that just imagine if trees gave out Wi-Fi signals. Wouldn't we planting so many of them? But it's kind of sad that it produces something that we take for granted, and that's the oxygen that we breathe. So let's stop chopping them. The birds need the trees, we need the trees. And it starts at your home. Protecting the environment starts at your home. If everyone did just a little bit, like stop plastic, stop newspapers at your home. You have apps that you can download now to read these papers. It starts there. And if we could just do a little bit to protect the environment, very soon the protection wouldn't be needed anymore. And the environment would be protection free. So start now, stop these plastics and chopping trees, and use your apps to read newspapers and everything. Start with these little things. And the most difficult of all, which I kind of fight with, is try and be a vegetarian and start with just once a day. Just make it a day that Sunday I'm not going to eat non-veg. It will help the environment because animals are here to exist. They're not here to satisfy our stomachs. Just say one thing. I keep saying that my stomach isn't a graveyard. So try and be vegetarian and help the environment as much as you can. Thank you. That was from the heart. A big round of applause, please. Thank you, Sneha. Thank you very much. Thank you. Thank you, Sneha. Big round of applause for this. And this beautiful is also lady. a beautiful gesture, Mehraj, that Okay, now the mic goes to Raghu and Rajiv both. Please, you're a role model, you're an idol. People will definitely listen to you. Some tips for the people to save the environment. Yeah, and how do you keep yourself so fit and young? Share that, please. Come on. We don't have money for petrol. This is an illusion, yeah. So no, really, I really want to really appreciate everybody who's come here. And hopefully you'll become ambassadors of the cause and you will spread the word. There's a very basic change, small change in attitude that we need to bring, but it's fundamentally, it'll change the way we behave. Our world, our city, our earth is not something that we've inherited from our previous generation. It is something we've borrowed from our next generation. Just remember that, and you have to find this, you have to leave this place cleaner and happier than you found it. This is something that we do, and we really think that it's a win-win situation. Taking public transport or cycling is good for your health, good for the earth, good for everybody. Yeah, I want to give a big thank you to the Bhamla Foundation and Asif Bhamla Saab. It's a very good initiative, and thank you all for being here. मैं जानता हूँ कि यार लाइफ में बहुत संघर्ष है, बहुत स्ट्रगल है, और एनवायरनमेंट तो ठीक है, सभी है, हम क्या कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, और ये बहुत चलता है, एटीट्यूड सबका रहता है. आई थिंक कई चीजें, इनफैक्ट हमारे देश में ये बहुत ज्यादा है. अगर आप दुनिया घूमोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, हमारे देश में थोड़ा कम है, इसलिए ऐसे इवेंट्स बहुत बहुत काम की चीज हैं. लिटरिंग अगर आप कम करेंगे, अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो एनवायरनमेंट का भी ख्याल हो जाएगा. आप चल के जाओ, साइकिलिंग करो, कार इतना यूज मत करो, लिटर मत करो. और मैं टीचर नहीं हूं और ट्यूशन नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये तो बेसिक चीजें हैं. आप कहीं भी दुनिया में जाओगे तो ये चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी, तो हमारे देश में रह के हम क्यों नहीं करते. थैंक यू अगेन आसिफ बामला साहब. Thank you for inviting us here. Thank you for having us here. Raghu Rajiv ji. And Ruby is disappeared. She's just coming back. She's scared. She said, "ये लोग आ गए अभी." Okay, I like to call Mrs. Alka Kerkar to please come on stage and felicitate the super dude roadies, Mr. Raghu and Rajiv. You have to stop saying that. No, you have. No, you are actually. We admit that. Mrs. Alka Kerkar, please. The Honorable Deputy Mayor of the MCGM. Thank you, ma'am. Such a pleasure, ma'am. Thank you so much. Mrs. Alka Kerkar, doing superb job from the BMC. Sapling given by Alka Kerkar ji to Raghu and Rajiv. Thank you so much, ma'am. Thank you. Oh yeah, Thank you. I have lots of these at home. My wife really loves gamlas. Thank you for this. Thank you so much. Thank you for having us one more time, and thank you. Thank you so much, and I'm sure
अपनी भाषा में पर्यावरण कैसे बचाना चाहिए वो आप सिखाए. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर तोची रायना जी. थैंक यू. थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मेरा बचपन का सपना था. मैं पटियाले से निकला, पटियाले से नेपाल में पढ़ाई की और करते करते 5 एलिमेंट्स, ये 5 एलिमेंट्स क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है. जो मैं बचपन से सपने देखता था कि मैं करूं क्या, तो एक ही चीज थी, वो थी मेडिटेशन. एनवायरनमेंट डे को जानने के लिए कि 5 एलिमेंट, सांस मैं नाक से लिया, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र पीछे से मूलाधार होते हुए आके कंठ पे, सिनेमाटोग्राफर आंख से देखा कि मेरे विचार क्या कहते हैं. वो विचार कहीं ना कहीं लुप्त हो गए. एनवायरनमेंट डे, जिन्होंने 500-600 साल पहले से पेड़ लगाया, उन्होंने अपने बच्चों की तरह उसको पाला. मैंने बचपन में देखा उस पेड़ को काटते हुए, सोचा था इसी पे काम करूंगा. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और बचपन से पेड़ लगाता हूं. जहां भी शो होता है वहां जाके खुद हाथों से लगाता हूं. क्यों लगाता हूं? मेरे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा ये पेड़ है जो हमें ऑक्सीजन देती हैं. आपको एसी नहीं दे सकता है. 125 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान के अंदर, जहां तक मैं समझता हूं. और एक घर में अगर एक बच्चा या 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं तो वो हर घर से 2 पेड़ लगा सकते हैं अपने बच्चों की तरह. हिंदुस्तान में 250 पेड़ तो वैसे लग जाएंगे, 250 पेड़ वैसे लग जाएंगे. और वो आपसे खाना तो मांगेंगे नहीं, आपको सुबह शाम पानी देना है. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जब तक हम इतना नहीं सोचेंगे कि 1 साल में 1 दिन आएंगे, कहेंगे चले जाएंगे, पूरा साल क्या करेंगे? ये चिंता का विषय है, अध्ययन है. आप सोचिए, आप सांस लेते हो, क्यों लेते हो? 70% पानी है, और समुद्र का खारा पानी आप पीते हो. जब आंख से मुंह में आता है तो नमकीन दिखाई पड़ता है. पूरा ब्रह्मांड लेके आप पैदा हुए हो, और ब्रह्मांड को हम बिगाड़ते चले जा रहे हैं. इसके दोषी हम सब हैं. सुधारना है, हर घर से 2 पेड़ लगाएं. इतना ही कहना चाहूंगा. कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं. बाकी आर्टिस्ट हूं, आया हूं कुछ सुनाने के लिए. यही जानना चाहूंगा कि आप तोची रैना को कितना प्यार करते हैं. जरा हाथ खड़ा कीजिए. क्यों करते हैं? कि मैं गाने बहुत अच्छा गाता हूं इसलिए नहीं. मैं पोएट्री से प्यार करता हूं, मैं विचारों से प्यार करता हूं. विचार मुझे यहां तक लेके आए हैं जो भगवत गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, उन सब में है. लेकिन मैं 16 लाख सेंचुरी पहले जाकर के वो देखा, जब लैंग्वेज ही नहीं थी तो विचार कहां से आए? इकट्ठा करने में पूरी जिंदगी निकल गई. लगा यार अभी तो कुछ आया नहीं, पूरा समुद्र पड़ा है, और डूबेंगे तो निकल के आएंगे. इतना ही कहना चाहता हूं. आप अपने विचारों को जोड़िए एक दूसरे के साथ, तो प्यार पनपेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, तब जाके इश्क खुदा से होगा. First of all, I'd like to congratulate Asif and his entire team, his foundation, for organizing this every year. And, this is a great platform for all of us, for all of you, to really come together
with one voice on how we can save our environment. This planet does not need us. We need this planet. And I think that's the thought we should go ahead with. And we need to really put forth what we can do to help our environment, help our city. Let's forget what the governments are going to do, if we have laws in place or not, but individually what we can do to save our earth so that we build a better future for our children. So thank you very much, Asif, for giving us this opportunity and this platform. Thank you. Thank you very much, Priyaji. Thank you. Thank you for coming. And Urvashi ji will give goodie bag to Priyaji from Triple X. We met this gentleman many places, share our ideas and everything. And the best part was he came forward for this. He supported the event. The great Vivek Oberoi. Big round of applause for this. Mr. Vivek Oberoi. And we have Mr. Ramdas Kadam, the Environment Minister, Government of Maharashtra, Mr. Ramdas Kadam. Thank you so much for being here. Ruby. Hello Mumbai, how are you guys doing? Firstly यार आप सब लोगों को सबसे बड़ा सबसे प्यारा मेरे दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बारिश हो रही है, पहली बारिश, सुहानी बारिश। इससे पहले गर्मी थी, बैठने के लिए जगह नहीं है, इतने सारे लोग आए हैं। उसके बावजूद you guys come here, you support this event every single year. I just want to say thank you to the commitment and the spirit and the amazing people of Mumbai. Woo! I want to say thank you to Asif. He's been a really cool guy, working really hard towards preserving the environment. Aaj subah my father was telling me, he said ki the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. So to answer Ruby, who also is somebody who works so hard for so many causes, wonderful soul. What are we doing in our personal life? Plant as many trees as we can. I think that's the most incredible thing. Small things to preserve the environment, save the environment. I have a dream because I've got kids now. Do bacche hai mere. So I want to give them a better Mumbai, a better India, a better world. I was just thinking that I'd like to be living in a world where we don't have to protect the environment. You know, protecting the environment is not part of our lives. Our lives are such that the environment is automatically protected. So that's what I would love to wish here. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you, Vivek. And also, Vivek, one dialogue from one of your films, please. Something which you know they're going to love. Hey, Ganpat. Chal darula, Vivek Oberoi. Okay, ek do cha line aur yaar, come on. You hardly come. People, see you on these places. You see, there's a line bars. जो लिखते भी हैं और बहुत अच्छा बोलते भी हैं और कभी-कभी गाते भी हैं। मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और एक प्रकार से बड़े भाई भी हैं, गुरु भी हैं, सामने बैठे हैं मेरे। तो in front of him I can't do anything, but I can only request him to come on stage. Prashant Joshi ji, please come on stage. Brilliantly talented, multi-award winning, completely social. Absolutely, Vivek. Socially aware citizen of India, Mr. Prasoon Joshi. Guys, give him a big hand here. Come on. And also, I must say, very patient, very quietly and humbly he's been waiting. No, I was waiting for Honorable Chief Minister to come, and I was supposed to come on stage then. But thank you, Vivek, for inviting. And no. So we'll call you, sir, all the time, sir. आपको तो आना ही है. मुझे बहुत खुशी है कि हर साल की तरह आसिफ साहब ने जो अपना जज्बा है वो कायम रखा है. बहुत आसान होता है चीज़ों को शुरू करना और बहुत मुश्किल होता है उनको कायम रखना, क्योंकि आपके चारों ओर एनवायरनमेंट बदलता रहता है, उसके बावजूद आपको चीज़ें चलानी होती. और आज एनवायरनमेंट डे मेहरबान भी है आप पर. और all I want to say is that I think we talk global all the time and we forget that